Hi. So, in this lecture, I will try to explain you the explanation, the working, and the mathematics behind artificial neural networks. Okay. So, let's talk about our topic. Okay. So, in traditional machine learning, as as you're familiar with it, you should be familiar with it. Uh, uh, before diving into this topic, because it helps somehow. It helps. um, I mean, the knowledge of traditional machine learning, it is helpful to understand neural networks. Also, you should be familiar with the linear algebra and bit of differential calculus. Okay, so with traditional machine learning, what we try to do is we use mathematical and statistical. We use mathematical and statistical, I should say, not formulas. I should say models, mathematical and statistical models to you know to do intelligence tasks. uh, by intelligent tasks, I mean prediction. It can be like predicting anything. For example, given the location of the house, the size of a house in acres and stuff like that, number of bedrooms, etc. And this information is given. Now predict the house price, you know predict this information given, or predict this. Or suppose the value of diabetes pedigree function is given, or blood pressure level is given, or HbA1c, yeah. So HbA1c level is given. These certain values are given. Age is given. The gender of that particular person is given. Now predict if that person has diabetes or not. Okay. So this is classification. This is regression. This is just extremely basic stuff you should be familiar with. But I'm telling. So these are some of the things that we can achieve via mathematical models in traditional machine learning. Okay, but if we go for if but in this lecture we are talking about artificial neural networks, right? So artificial neural networks also try to, it is a similar thing. They try to achieve a similar thing. I shall divide the term artificial. Let's divide the neural plus networks. Okay, let's divide this term. Yeah, artificial. It means that we are trying to implement brain artificially. I should say human brain, of course. We are trying to implement human brain, or mimic the powers of human brain, like what human brain can do via through a computer system and of course, mathematical models. We still use mathematical models here, but in traditional machine learning, it solely relied on just mathematical and statistical assumptions and models. But here we are trying to like mimic, like how a general human brain perceives the reality and accordingly uh, you know produces, or accordingly understands what is going on.
We're trying to mimic this on a computer. That's why this term artificial. Now, let's come to the term neurons or neural, I should say. Neural is basically, as I said, neurons. So a brain, uh, yeah, wait. So, wait, yeah, okay. So a brain is made up of a lot of neurons, right? It's made up of neurons actually. Yeah. So to implement a whole brain, we first have to implement the building block, right? Like how can we implement the building block? So how can we do it? Let's see. In deep learning, this field of neural networks is called deep learning. You know the buzzword. So neurons. You are familiar with biology that a brain is made up of numerous neurons. So it's the human brain, but as I said, we want to implement it via mathematics and on artificially on a computer system. So how can we do this? We This is the formulation. This okay. I will explain all the terms. Just give me a minute or two. X4, X5, dot dot dot, XN. This is neuron. This is output. This is I will explain all of this. Don't worry. Okay. So let's divide this mess of a thing one by one. So what are these? What are these? X1, X3, X4, X5. Okay. This whole thing is a neuron. Like it's the mathematical representation of a neuron. Like we are representing the neurons in our brain via mathematics so that we can implement it artificially accordingly. Okay. So what are these x1, x2 till xn terms? These uh, these are just inputs. ठीक है? X1, X2, X3. I'm sorry, my handwriting is very bad. These are n inputs. N inputs. Okay. And this blob, this ball-like structure, it is basically a neuron. This is how we represent a neuron. Representation. And this Z, it is our output function. We will talk about it. Output, or I should say, more sophisticatedly speaking, pre-activated output, and this term activated output. Okay, I will explain all of this. Don't worry. So these are inputs. These are like so that are connected, right? All of this you're seeing these lines. These let me highlight. Yeah, let me use a different color. Yeah, these connections. You can see these lines. These all these n inputs are connected via these lines. These lines have been assigned to a certain uh, yeah certain numerical values w4 w5 wn है ना. So there are n inputs
and inputs, and the connections have n weights. These these numerical values are called weights. That is, all these connections of different inputs, like the n inputs, right? And these inputs, as I said, are numerical in nature. So this can does not necessarily need to be integer. It can be of floating type, or a fraction, or whatever you may say. Same with these numerical values assigned in the connections. So what are weights? Numerical values assigned to the connections. Okay, it's like the like these are called weights, that those numerical values like W1, W2, W3, Wn. W1 is the weight assigned, or the numerical value assigned between the connection of X1 input and the neuron. Connections, by connection I mean connection between the connection between input and neurons, or neuron. Okay. Okay. So what do these terms signify? These numerical values. See, x1, x2, x3, xn are inputs, and as I said in the above here, this is y, right? After some calculation, after after some calculation, sorry, wait a second, just yeah, after some calculation, we get the value of y. You know? So how do we calculate it? I will discuss it in deeply, but we calculate it via using these x x1, x2, x3, xn input numerical values. We use these specific values to calculate why this output, this activated output, or whatever this shenanigan is going on. We calculate this by specific mathematical formulas. I will discuss about the formula, but so so what? So this output is like generated via formula, and we use these inputs, and so these weights basically tell us importance of the connections. Okay, importance of the connections. What do you mean by it? Like, if x1, let me explain it like this. Suppose W1, let's say W2, W3. Let's say this is the condition. Assume, just assume. Okay. So as I said, numerical values assigned to the connections, right? And these numerical values could be anything, integer and float, just like inputs. This does not necessarily need to be strict integers. It can be floating point values as well, decimals, So so importance बताते हैं ये weights. How do they tell the importance? Suppose this is the connection. We assume W1 is greater than W2, and W2 is greater than W3. It means that the X1, this input, this particular X1 will
contribute more towards the output. Why? I will explain all of this, like how y is calculated. Just give me some time. I am first explaining what is the importance of these weights. W1, W3. So, like, and x1, the contribution of x1 or the effect, like the effect. This, as I said, x1, x2. These inputs are used for calculation of y, right? So, how these are used? So x1, how the x1 will affect the value of y? It basically W1, these weights tell, like W1, this assigned W1 value of the connection between x1 and the neuron will tell that to to how much to how much, like how much that particular input x1 will contribute towards the calculation of output y. That's it. So suppose if w1 is greater than w2 and w2 is greater than w3, we mean that x1 will contribute more towards the y than the x2 input, and the x2 input will contribute more towards the output, the calculation of output, than x3, right? x2, x3 contribution. ओके, अच्छा। तो ये वेट्स की बात होगी। अच्छा, एक और टर्म आता है हमारा here here we also consider a b value, bias. This is called bias. b और b नॉट, कई जगह b नॉट से भी डिनोट करा जाता है इसे। so b नॉट is just, you know, the constant term, right? If you talk about bias thing, bias b या फिर b नॉट से इसे हम डिनोट करते हैं। b जस्ट कांस्टेंट टर्म वाली फीलिंग दे रहा। ठीक है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस फर्स्ट डाइव इनटू वेट वेट अ सेकेंड, जस्ट या ओके। कांस्टेंट टर्म वाली फीलिंग देगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका। नाउ लेट अस फर्स्ट dive into how this calculation of z, ठीक है। calculation of z, okay। So there is specific formula for calculation. Z is calculated via this formula. B. This is the formula for the sorry, bit mistake. This is, yeah, this is the correct formula. ठीक है। So explain करते हैं। It's Z is basically the summation. If I want to put it in words, summation of product between inputs all the input values and their corresponding weight values, ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स दिस बायस टर्म, है ना। अब तुम्हें लाइक फीलिंग आ रही होगी, अब तुम्हें लाइक फीलिंग आ रही होगी
कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म का काम करता है। मेन मेन ऑफ कोर्स यही है ना, मेन ऑफ कोर्स यही चीज है तुम्हारी, ये दिस इज द होल थिंग, कि जितने भी n इनपुट्स हैं दे आर multiplied with the corresponding weight values, the corresponding connection के weight values, and then multiplied and then summed. All of these values are summed, and of course extra term bias is added. This gives the feeling of you can say constant term, ठीक है। constant term in the sense एक analogy की तरह समझो, y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, z इक्वल टू wi xi प्लस b हो गया, है ना। वैसी ही एनालॉजी है। सी में किसका काम करता है, इंटरसेप्ट का काम करता है, यू नो एज अ कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली बायस भी एज अ कांस्टेंट टर्म की तरह काम करता है। these are weights analogous to each other and of course x inputs, ठीक है। okay, now if I expand z, like for all the n inputs out there, it will expanded form will be like wn xn plus p. So this is the expanded form. Now you will see that this thing is linear. This thing is linear. Now what I said in the beginning of what is the purpose of using artificial neural networks? What is the meaning of the artificial behind that word that we want to implement? Yeah, yeah. So we are trying to implement neurons. We are trying to implement human brain artificially on a computer system using mathematics, right? So हम implement कर रहे हैं brain को। अब you know the world is complex thing. हमारा brain is very complex and like so beautifully complex that it can perceive the all the complex situations and like we can understand what is going on thanks to our complex nature of the a brain, like how beautifully it can understand the real world, है ना। अब ये जो z जो है, this is linear, right? This is not complex. The z alone won't be able to capture, z alone won't be able to capture complex patterns, ठीक है। Z alone won't be able to capture complex patterns, like, and our aim is to mimic human brain, and human brain can capture it, complex patterns। तो सिर्फ Z से काम नहीं चलेगा ना, तो हम क्या करते हैं, Z को हम जैसे मैंने शुरुआत के डायग्राम में बताया था, यहाँ पे या ये जो है, ये जो मैंने FZ जो लिखा है, दिस थिंग, अब क्लियर होगा। FZ जो लिखा है, ये दिस इज, ये जो F है ना, we are passing z on a special function. Wait, let me just expand the screen. Yeah, let me just expand it. Wait a second. Yeah, is it visible? I hope it is. Yeah, okay. So ये जो fz जो है, जो f है, this is special function, ठीक है। We pass z through special function so that fz की जो वैल्यू आएगी, ये है y है, ठीक है। ये जो y है, this can now it can capture
कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, है ना। जैसे हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जैसे कितना ब्यूटीफुली सब कुछ लाइक कैप्चर करता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को, वैसे ही अगर हम z को एक स्पेशल फंक्शन से पास करें, वो स्पेशल फंक्शन से पास करते, वो ऑफ कोर्स y वैल्यू देगा। अब नाउ दिस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स in the world. So this special function is called activation function, है ना, activation function. That's why ये जो मैंने shenanigans जो भी किया है मैंने, that's why this, wait a second, where is my pen, yeah, highlighter, this pre-activated output, ये क्या है और ये activated output क्या है, मैंने जो बताया था, ये activated pre-activated output is z and activated output is y. Pre-activated output means the output of all of this mathematical calculation का जो output है before passing into the activation function, that's why pre, है ना, और y है after the value of all of this stuff after passing into activation function, है ना। activation function भी कई प्रकार के होते हैं, you know, बहुत अलग अलग प्रकार के अंदर टू कैप्चर डिफरेंट एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, ठीक है। एक होता है हमारा सिग्मॉइड, इफ यू आर फेमिलियर विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये होता है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स। हाइपरबोलिक टैंजेंट, ये होता है हाइपरबोलिक टैंजेंट tan h x, you must be knowing these are like basic mathematical functions. एक होता है तुम्हारा ReLU x, this is the most popular activation function for used in for most of the tasks, okay। इसका definition होता है x if x is greater than 0, 0 if x is less than equal to, है ना। like हम किसी भी इनपुट x को पास करें वैल्यू से, तो x होगा अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, 0 होगा अगर वो वैल्यू 0 या नेगेटिव है। अच्छा, ओके, या सो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, लाइक हम इन फंक्शंस में सिग्मा एफ जेड का मतलब क्या है, लाइक इन फंक्शन में सिग्मा में हम z पास कर दिए, है ना, लाइक 1 प्लस ये जो वैल्यू आई है, मैंने क्या बताया, मैंने डब्ल्यू आई एक्स आई आर वैल्यूज, डब्ल्यू डब्ल्यू आई एक्स आई आर वैल्यूज, डब्ल्यू आई एक्स आई आर वैल्यूज and b is a numerical value, okay। So um, these are all these summations and products will produce a certain numerical value, है ना। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया, इससे ही हम ये ऑफ कोर्स लीनियर है, दिस अलोन वोंट बी एबल टू कैप्चर ऑल दी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स आउट देयर। सो हम इस z जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया, जो प्री एक्टिवेटेड वैल्यू आया, उसे हम एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं, है ना। एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं, लाइक 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, जेड न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें पास करते हैं। अब जो भी वैल्यू आया y, दिस वुड बी आवर और एफ जेड, है ना, दिस वुड बी आवर न्यू आउटपुट विच कैन कैप्चर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, ठीक है। सिग्मा जेड हो गया, वैसे ही हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन में हमने ये जेड की वैल्यू पास कर दी, फिर रेल्यू में हमने ये z की वैल्यू पास कर दी, है ना, कि लाइक z पॉजिटिव है तो z ही जाएगा, z नेगेटिव है तो 0 जाएगा। इससे हम क्या क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू अचीव, वांट टू अचीव टू टू कैप्चर, आई शुड से,
to capture complex patterns। ठीक है, अच्छा, हो गया। तो ये बात थी न्यूरॉन की, ये एक न्यूरॉन था एक। ठीक है, ये ये बात हुआ न्यूरॉन का, है ना। जितने एन इनपुट्स है, एन इनपुट्स, ये जो कनेक्शंस है, कनेक्शन में अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन होते हैं। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम वेट्स बोलते हैं, है ना। फिर बायस होता है, बायस गिव्स द फीलिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म। इन सब का प्लस करते हैं, उससे हमें प्री एक्टिवेटेड और आउटपुट मिलता है जेड, विच इज लीनियर इन नेचर। बट दुनिया में सब कुछ लीनियर नहीं होता, है ना। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, I try to implement our human brain. Human brain can understand complex stuff. So to understand complex stuff, we have to make the linear thing non-linear, है ना। Non-linear thing, ताकि ये complex patterns है उसे अच्छे से कैप्चर कर पाए। तो Z जो आया, which is linear in nature, हम एक एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो भी टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन है, मोस्ट पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन इज दिस, सबसे ज्यादा यूज होता है for most of the tasks and most of the data sets। best activation function you can say a ReLU function। so so इसके अकॉर्डिंग हमें fz की वैल्यू मिलती है y, है ना। लाइक एक्टिवेशन फंक्शन है, इसमें हम z डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू मिलती है आउटपुट, which will help us to capture complex patterns। तो ये हुआ हमारा एक न्यूरॉन की बात, है ना। तो ठीक है, तो हम क्या क्या बात कर रहे थे, we were understanding this term artificial neural network। artificial neural network, artificial हमने समझ लिया, न्यूरल समझ लिया, अब हम नेटवर्क्स समझते हैं। नेटवर्क्स, it must be self explanatory now what we are going to talk about next is just the जो नेटवर्क्स जो शब्द है, इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, लाइक ये बस एक न्यूरॉन पढ़ा हमने। अब ऐसे कई सारे न्यूरॉन को हम एक साथ कनेक्ट करवाते हैं, और उसी से ही हमारा बनता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लाइक ये एक न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन हो गया। थोड़ा सिंपल आर्किटेक्चर से लेते हैं, ये एक न्यूरॉन हो गया, 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 और ये एक न्यूरॉन हो गया, है ना। या लाइक दिस, है ना। ये बहुत ही सिंपल है। मैं लेट मी एक्सप्लेन इट फुली। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सो जो नेटवर्क है, नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, है ना। जो फर्स्ट जो जो फर्स्ट जो तुम्हें दिख रहा है, ये फर्स्ट सेट ऑफ न्यूरॉन्स, इट इज कॉल्ड इनपुट लेयर। इनपुट लेयर होता है ना। ये जो बीच के जो न्यूरॉन्स दिख रहे हैं तुम्हें, इट इज आउटपुट लेयर, सॉरी, दिस इज हिडन लेयर। ओके, hidden layer, and this stuff, this is output layer। अच्छा, तो
नेटवर्क जो है हम इंटरकनेक्शन है, ये हम एग्जांपल की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला नेटवर्क का जो पहला पार्ट हो गया उसे हम इनपुट लेयर बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को हिडन लेयर्स बोलते हैं। अलग अलग बीच वाले पार्ट में हिडन लेयर्स भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और आउटपुट लेयर बोलते हैं, है ना। अब इंटरकनेक्शन इन द सेंस की जैसे इनपुट लेयर के सारे न्यूरॉन्स को ले लो, इनपुट लेयर के न्यूरॉन्स को ले लो, ये वाला जो न्यूरॉन है, यार थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, वेट, लेट मी जस्ट इरेज इट, थोड़ा समझ समझ में आए। या ये वाला जो ये वाला जो न्यूरॉन है, ये क्या होगा कि जो नेक्स्ट लेयर है, ये बस ये वाला लेयर, इस वाले लेयर से इस वाले लेयर के सारे न्यूरॉन्स से कनेक्ट होगा, है ना। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, इट्स नॉट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, लाइक ये जो लेयर है, हिडन लेयर, ये हिडन लेयर्स है ना, मल्टीपल हिडन लेयर्स है, मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं, लाइक एग्जांपल है, इसमें हम दो हिडन लेयर्स रख सकते हैं, और एक हिडन लेयर में एक और न्यूरॉन हो सकता है, बट हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैवंट टेक मोर देन टू न्यूरॉन्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके, ऑलराइट। सो तो क्या हो, so if I try to put it in words, every neuron at a layer will be connected to will be wait, connected to all the neurons of the hidden layer, ठीक है। सो सो इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट इनपुट लेयर है, these are just inputs, है ना, like x1, x2, x3, these are inputs, so numerical values। तो हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे करके ही कि एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, ऐसा, राइट, एन इनपुट्स होते हैं बेसिकली, तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है यहाँ पे कि हम दिस इज बिट डिफरेंट, दिस इज इनपुट लेयर में बस हम इनपुट्स रखते हैं, हमारा मेन चीज यहाँ पे फोकस करते हैं। ये जो न्यूरॉन है, दिस इज कनेक्टेड टू x1 आउटपुट, so x1 input, x2 input, and x3 input. Let me explain. Yeah, I'm so sorry for this. Let me select a good color. ये जो न्यूरॉन है, this is connected to this input x1 input, this input x2 input, and this input x3 input. As I said, as I formulated in the previous section, ठीक है। Similarly, ये जो नीचे वाला न्यूरॉन है, this is also connected to x1 input, x2 input and x3 input, ठीक है। अब या सो कनेक्टेड होता है, ये इनपुट्स है, इनपुट्स ऐसे कनेक्टेड होता है, ये इनपुट लेयर इज बिट स्पेशल, ये बस इनपुट्स है ओनली, ठीक है, ओनली इनपुट्स है, न्यूमेरिकल इनपुट्स है, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्टेड होंगे, है ना, न्यूरॉन्स में कनेक्टेड होंगे। अब पहला हिडन लेयर स्टार्ट हो जाता है, तो अब क्या होगा, वही सेम मैथमेटिक्स लगा के
और let me remind you, let me also tell you that जो ये जो कनेक्शन है इनपुट्स का W1 का, इसके साथ वही सेम वेट्स होंगे, है ना, सेम तरह के वेट्स होंगे, W1 डैश, W2 डैश, W3 W3 डैश, है ना, sorry, let me, yeah, sorry if it's becoming a bit confusing, let me explain it properly. Yeah, so W1 है, W2 है, ये कनेक्शन है X1 के साथ, इन दोनों वेट्स के साथ कनेक्शन हो गया, X2 का ये W1 डैश, W2 डैश, W1 डबल डैश, W2 डबल डैश, है ना. W1 double dash is the weight value between the connection of this neuron and X3. W2 double dash is the weight value of the connection between this neuron and this. ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो ये वही चीज है, लाइक ये वही चीज है ना, जो मैंने ऊपर समझाया है. दिस इज सेम थिंग हियर, इज द सेम थिंग. ठीक है, ओके. अच्छा, अब वही मैथमेटिक्स लगा के, वही मैथमेटिक्स लगा के वही सेम मैथमेटिक्स लगा के इसका मान लो y1 जनरेट हुआ, इसका मान लो y2 जनरेट हुआ. ठीक है, नाउ दिस y1 एंड दिस y2 विल एक्ट एज इनपुट्स फॉर दिस लेयर. अब समझ आया. नाउ you will be able to appreciate the previous concept, है ना. नाउ ये जो W1 W2 जो भी है, ये इनपुट जैसे भी कनेक्शन हुआ है मैथमेटिक्स लगा के, जो पिछले वाली जो मैथमेटिक्स लगा के एफ जेड जो कैलकुलेट हुआ वाई, है ना, वाई जो कैलकुलेट हुआ न्यूरॉन का, मैंने वो सब वाई ऑफ कोर्स इस वाले डायग्राम में दिखाया नहीं है क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा डायग्राम, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. जो भी मैं न्यूरॉन में गया, W1 ये जो वैल्यूज थी, X1 कैलकुलेट सब, X1 X2 X3 सब कुछ कैलकुलेट हुआ इस न्यूरॉन का. मान लो ये न्यूरॉन ए है, ये न्यूरॉन बी है, ए न्यूरॉन का वाई ए वैल्यू कैलकुलेट हुआ और बी न्यूरॉन का वाई बी कैलकुलेट हो गया. नाउ वाई ए एंड वाई बी वुड बी द न्यू इनपुट्स फॉर दिस लेयर, है ना. अब मान लो दिस इज ए डैश न्यूरॉन, दिस इज बी डैश न्यूरॉन, एंड सपोज दिस इज डब्ल्यू ए, this is WB, this is WA dash, this is WB dash. WA is the weight assigned to the connection between A and A dash. WB is the weight assigned to the connection between A and B dash. WA dash is the, मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना, like these connections will be assigned to weight, है ना, weight will be assigned to these connections, and these YA and YB values will be acting as inputs, like जैसा इस layer में X1 X2 X3 ने input की तरह act किए थे for this layer, for this hidden layer, है ना. So इस hidden layer के लिए for this hidden layer this YA value will be acting as, YA and YB will be acting as the inputs for this layer. ठीक है, बहुत ही गंदा हो गया. लेट मी इरेज ऑल ऑफ इट. लेट मी इरेज इट. या ठीक है, तो अब वैसे ही मान लो, अब वैसे ही सेम मैथमेटिक्स लगा के वाई ए डैश वाई बी डैश आ गया, और यहाँ पे भी मान लो तुम्हारा कुछ वेट आ गया डब्लू, कुछ भी मान लो
WP WQ है ना, तो वही सेम मैथमेटिक्स लगा के इस ये न्यूरॉन भी फाइनल आउटपुट जनरेट करेगा, है ना। तो वही सेम मैथमेटिक्स हर एक न्यूरॉन के बीच में रिकर्सिवली लग रहा है। दीज आर, वेट अ सेकंड, या सो दिस इज दिस इज इनपुट लेयर, ये इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर ऐसे कनेक्ट, वैसे कनेक्शन होता है। दिस इज फर्स्ट हिडन लेयर, फर्स्ट हिडन लेयर। वैसे मैथमेटिक्स से निकाल के y मान लो वाई ए और वाई बी आ गया, है ना। फिर वाई ए वाई बी, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, यू विल बी एबल टू फॉलो इट। दिस इज इनपुट x1 x2 x3, हम अब नाम दे देते हैं इनका। ये होगा ए, ये होगा बी, ए डैश बी डैश ओ आउटपुट, है ना। ये W1 W2 W1 डैश W2 डैश W1 डबल डैश W2 डबल डैश, है ना। W ए डैश W ए बी डैश W बी ए डैश W बी बी डैश, है ना। W ए डैश O W बी डैश O, है ना। अब यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस इज वाई ए आउटपुट आया वही से मैथमेटिक्स लगा के, दिस इज वाई बी, है ना। सो वाई ए की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, इनका बायसेस भी बी ए बी बी बायसेस भी इंक्लूड है, डोंट फॉरगेट देम, बी बी डैश, है ना। वाई वाई ए की वैल्यू क्या होगी? वेट अ सेकेंड, वाई ए की वैल्यू क्या होगी? x1, sorry, yeah, x1 w1 plus x2 w1 dash plus x3 w3 w1 double dash plus b, है ना। Similarly, yb would be equal to x1 w2 plus x2 w2 dash plus x3 w3 double dash plus db, right? This is how will be, and of course a whole value will be passed to activation function, है ना। ये ऐसे y भी कैलकुलेट हुआ। Similarly, y a dash and y b dash will be calculated. Yeah, y a dash would be y a w a dash plus y b w b b dash plus b a dash, and this will be passed through activation function. Similarly, y b dash would be y y b लेट मी, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मैं कंफ्यूजन हो गया था। b dash plus b dash, है ना। These are biases, and similarly it will be passed through activation function.
So similarly, the calculation will proceed for the output. कैसे होगा? Ya dash would be y. Wait a second. Like this was the notation, right? W a dash o plus yb dash w b dash o plus of course इसका भी so let me maximize it. Yeah, इसका भी कोई बायस वैल्यू होगा बी नॉट, बी ओ मान के चलते हैं. तो similarly here b naught, and same thing will be passed through activation function. This was output. This uh, this was the corresponding calculation for first hidden layer. This was the corresponding calculation for second hidden layer. ठीक है. So ऐसे ही like calculate होता है और accordingly final output we can generate. ठीक है. फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. न्यूरॉन होपफुली समझ में आ गया होगा. न्यूरॉन n इनपुट्स कनेक्टेड हो सकते हैं और कनेक्शंस होता है इनपुट्स का न्यूरॉन्स के बीच में. उन्हें हम एक वेट असाइन करते हैं. वो w वेट्स जस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कनेक्शन. w से हम रिप्रेजेंट करते हैं. फिर बायस की बारी आती है. हर एक न्यूरॉन का अलग डिफरेंट बायस होता है. यहाँ पे भी हमने डील किया है बायसेस से. जो न्यूरल नेटवर्क का जो एग्जांपल लिया था हमने ये वाला, है ना. आई होप यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखना, आ जाएगा समझ में, है ना. ठीक है. तो ये दिस इज इनपुट लेयर. वेट वेयर इज या दिस इज इनपुट लेयर. ये आउटपुट इनपुट लेयर अकॉर्डिंगली यहाँ पे वाई ए और वाई बी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. दिस विल बी द न्यू इनपुट फॉर दिस. दिस इज फर्स्ट हिडन लेयर, राइट. दिस इज सेकंड हिडन लेयर. फॉर दिस सेकंड हिडन लेयर दिस इज न्यू इनपुट. अकॉर्डिंगली वाई ए डैश एंड वाई बी डैश प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस विल एंड दे विल बी इनपुट्स फॉर दिस न्यूरॉन ओ. सबका अलग अलग बायस होगा, है ना. इसका बी नॉट है. I hope you will be able to follow it. Yeah. So this was the first part. In this video we first understood the fundamentals, right? And fundamentals like what is neuron, basic fundamental mathematical formulation of a neuron and a neural network. और ये जो हमने जो कैलकुलेशन जो भी हुआ आउटपुट का, है ना. ओ का जो वैल्यू आया है एक न्यूरल नेटवर्क से, this is feed forward. Wait, sorry, I'm extremely sorry. Not feed forward. This is called, extremely sorry, this is not feed forward. This is called forward propagation. ठीक है. This was part 1 of my series. Part 1 ठीक है. अब part 2 में हम बात करेंगे बैक प्रोपगेशन के बारे में.
this is the backbone of ANN, है ना? like ANN कैसे काम करता है प्रॉपरली, वो हम बैक प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में. वी डिस्कस्ड अबाउट basics of neuron, the fundamental mathematics of neuron, and how all these values are calculated. I hope you will be able to follow it, that how the final output is calculated. ठीक है, forward propagation हो गया complete. Stay tuned for the next video. I will be releasing it soon. In the next video I will be explaining the mathematics of backpropagation. For now, thank you. Signing off.